Deep Water Part 2. I went to the pool when no one else was there. The place was quiet, the water was still, and the tide bottom was as white and clean as a bathtub. I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. Now, William Douglas, the narrator of this excerpt of this essay, tells us that he went to the pool, that is Young Men Christian Association pool, to learn swimming. And he went when nobody else was there. Place was very quiet, and the bottom of the pool was also very, very clear. And he was very timid. He was very fearful about going in alone. उसे डर तो लग रहा था. तो वो he was sat on the side of the pool to wait for others. I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. So he had not been there long there. उससे ज़्यादा देर नहीं हुई बैठे हुए. फिर वहाँ पर एक big boxer type of a boy came. Must be of 18 years old. He had thick hair on his chest and beautiful specimen. He was a beautiful example. Specimen means example of a good physical body. With his legs and arms, they were showing wavy muscles, rippling muscles, अच्छी सी curling muscles उसकी body की दिखाई दे रही थी. He yelled and he shouted when he looked at the narrator, "Hi Skinny, how would you like to be dugged?" और एकदम से उसने कहा, "How would you like to be dugged?" Dugged means plunged in water. उसने कहा कि तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें इस पानी में plunge कर दूं, धकेल दूं. With that, he picked me up and tossed me into the deep end. I landed in a sitting position, swallowed water, and went at once to the bottom. And with that, he did not hear anything. He just picked the narrator up and he threw him into the deep end. Dala bhi deep end mein. And the narrator, he went inside the pool in a sitting position. He was damn frightened and went at once to the bottom. I was frightened, but not yet frightened out of my wits. Narrator कहता है मैं डरा हुआ तो था, but मुझे अभी भी होश थी. Out of my wits means he did not forget everything. On the way down, I planned, when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. उसने सोचा कि जब मैं नीचे जाऊंगा, मैं पैर से हिट करूंगा, फिर मैं ऊपर आऊंगा. हिट करते ही I will take a big jump, I will come to the surface, then I'll flat, then I'll paddle, और जैसे भी होगा मैं जल्दी जल्दी से मूव करके I will come to the edge of the pool. It seemed a long way down, but उसे ऐसा लगा जैसे बहुत लंबा रास्ता है नीचे जाने का. Those 9 feet were more than 90. और उसको ऐसा लगा वो 9 feet पूल में नीचे जाने का जैसे वो 90 feet हो. And before I touched, my lungs were ready to burst. और नीचे जाने से पहले उसको ऐसा लगने लगा as if his lungs were ready to burst because the water had gone inside. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength. But जैसे उसके पैर नीचे लगते हैं बॉटम पे, he summoned. Summoned means he called. उसने दोबारा से पूरी स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया, कॉल किया, and made what I thought was a great spring upwards. और उसने ऐसे ही पैर से उसको नीचे से स्प्रिंग की तरह से जंप लिया. And I imagined I would bob to the surface like a cork. और नरेटर ने यही सोचा कि मैं I would bob. Bob means I will move up to the water. मैं पानी के ऊपर आऊँगा like a cork. जैसे बॉटल के ऊपर कॉर्क लगी होती है ना, ढक्कन लगा होता है, उसको खींचते हैं तो वो तड़ाक से ऊपर आ जाता है. Instead, I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing. But वो धीरे धीरे ऊपर आए, ऐसे तो नहीं आए एकदम से. He opened his eyes and saw nothing. But water that had a dirty yellow tinge to it. I grew panicky. But the narrator says, now he was very afraid. And that water had a slight color to it. उसे ऊपर आते ही ऐसा लगा जैसे पानी जो है वो येलो कलर का है. Dirty yellow tinge means color. I grew panicky. एकदम से नरेटर जो है वो पैनिकी हो गए, alarmed हो गए, डर गए. I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. He came up, और ऊपर आए और उसने सोचा जैसे he wanted to grab, hold a rope, जैसे वो कोई रस्सी पकड़ने वाले हैं. But instead what came in his hand? Only water. I was suffocating. और वो एकदम से suffocate करने लगे, choke होने लगा. I tried to yell, उसे shout करने की कोशिश की, but no sound came. Then my eyes and nose came out of the water. फिर उसकी eyes और nose बाहर आए पानी से, but not my mouth. But his mouth did not come out of the water. I flailed
at the surface of the water. Now flailed means he moved his arms and legs without any control. बिना कंट्रोल के, बिना वजह वो अपने हाथ पैर मारने लगे. At the surface of the water, swallowed and choked. दोबारा से पानी अंदर चला गया और वो again he was choked. I tried to bring my legs up. Now he tried to bring his legs up, but they hung as dead weights. And then he found जैसे उसके legs paralyzed हो गए हैं. They had become powerless. और वो बिल्कुल लटक गए हैं. Paralyzed and rigid. उसके पाँव एकदम से powerless हो गए, rigid, stiff बन गए. They were not moving only. A great force was pulling me under. I screamed. और ऐसा लगा जैसे एक बहुत बड़ी सी फोर्स उसको दोबारा से पानी के अंदर खींच रही है. I screamed. He shouted. But only the water heard me. But ऐसा लग रहा था जैसे पानी ही उसको सुन रहा है. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. Or again, he went down into the water to the bottom of the pool. I struck at the water as I went down. Same. He again struck at the water. फिर उसने पानी में ऐसे strike किया जैसे वो नीचे गए. Expending my strength. Expending means spending his strength. अपनी पूरी strength लगाकर, ये means पूरी strength लगाकर उसने दोबारा से ऐसे किया. As one in the nightmare fights an irresistible force. जैसे किसी नाइटमेयर में, जैसे किसी डरावने सपने में कोई अनअपोजिबल फोर्स के खिलाफ करता है. जैसे कि सपने में देखता है किसी से लड़ रहा है, किसी अनरेसिस्टेबल मीन्स अनअपोजिबल फोर्स से लड़ता है, बट वो नहीं कर पाता. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ. ही लॉस्ट ऑल हिज ब्रेथ. माई लंग्स एक्ड. उसकी लंग्स एक करने लगी, पेन होने लगी. माई हेड थ्रॉब्ड. और हेड भी बीट करने लगा. आई वॉज गेटिंग डिजी. और वो एकदम गिडी फील करने लगे, सर चकराने लगा. बट आई रिमेंबर द स्ट्रैटेजी. फिर उसको एकदम से वही स्ट्रैटेजी, वही प्लान याद आया. आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस. मैं फिर वही करूँगा, बॉटम में जाके स्प्रिंग करूँगा और ऊपर कॉर्क की तरह से आऊँगा. आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर. फिर मैं फ्लैट लेट जाऊँगा. स्ट्राइक आउट माई आर्म्स. फिर मैं अपनी आर्म्स को चलाऊँगा. एंड थ्रैश विद माई लेग्स. और अपनी लेग्स को बीट करूँगा. देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ. फिर मैं एज तक आ जाऊँगा और मैं बच जाऊँगा. Rest in my next video. Thank you. Stay safe.